Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, that is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and today I will deliver its second lecture. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to narrate the major events in the life of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Rahmatullah alayh, like date of birth, founder of Pakistan, few major contributions and the date when he died. So my dear students, आज के लेक्चर में जैसे कि previously हमने कायद-ए-आज़म की early life के ऊपर एक नज़र डाली थी, from where he did his law, date of birth क्या थी उनकी, and that he is called the founder of Pakistan. So we discussed that. So आज हम उनके further to contributions हैं towards Pakistan, in the making of Pakistan, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, let's start it with an activity. Have you ever seen this building? कहाँ देखी है? टीवी पे देखी है. जो बच्चे कराची में रहते हैं हो सकता है उन्होंने विजिट भी किया हो, या from the other places people whenever we go to Karachi they visit this building. So do you know कि ये building कौन सी है? This is the tomb of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ये कायद-ए-आज़म का मज़ार है. कायद-ए-आज़म की तदफीन जो है वो यहाँ हुई थी. ये कराची में वाक़े है. आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है और पूरी दुनिया से जब पाकिस्तान लोग विज़िट करते हैं और कराची जाते हैं तो दे डू विज़िट दिस टूम और ये यहाँ पर फातिहा ख़्वानी करते हैं और अपनी जो है वार्म रिगार्ड्स और उसके लिए जो है कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. The day when we will call every people with their imam. So my dear students, अल्लाह ताला जो है वो तमाम कौमों को उनके इमाम के जो है वो पहचानी जाती हैं उससे. और जब अल्लाह ताला रोज़े हशर लोगों को उठाएंगे और उनको बुलाएंगे तो वो अपने इमामों के साथ पहचाने जाएंगे और उनके साथ उनको बुलाया जाएगा. सो कायद-ए-आज़म जो है वो हमारे लीडर हैं. कायद का मतलब ही लीडर है. So my dear students, Qaid-e-Azam जो है, he is a great leader of Pakistan. Qaid-e-Azam means great leader and he is the founder of Pakistan. His date of birth is 25th December 1876. So my dear students, some pre-reading questions. When did Pakistan came into being? Pakistan came into being on 14th August 1947. Very good. मुझे पता है, ये सबको पता है. So let's start the reading. I request you all to please open page number 38 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So let's start the reading. Jinnah, a great leader. Qaid-e-Azam Rahmatullah alayh was a lawyer by profession, but he stepped into politics to get a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. He joined the All India Muslim League party in 1913. He became its president in 1934. So my dear students, by profession Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो है वो एक lawyer थे, कानूनदान थे, लेकिन उन्होंने politics जो है वो join की और उन्होंने जो एक पार्टी जो एक political party जो उन्होंने पहली join की थी, that was All India Muslim League, और ये उन्होंने 1913 में join की. 1934 में कायद-ए-आज़म जो है वो उस पार्टी के president मुंतखब हुए. Let's read further. He struggled day and night for the due rights of Muslims. In the very beginning, he was a supporter of Hindu-Muslim unity. For this purpose, he tried to bring both nations together, but failed. The Indian leader tried to make the lives of Muslims miserable. So my dear students, Qaid-e-Azam ने politics क्यों join की? Because he wanted to get a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. लेकिन स्टार्ट में जब कायद-ए-आज़म ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उनका मानना ये था कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हिंदूज़ को भी और मुस्लिम्स को भी. लेकिन उनकी बहुत कोशिशों के बावजूद ही वॉज अनएबल टू मेक यूनिटी बिटवीन देम. सो उन्होंने क्या किया कि उनको फिर ये पता चला कि ये दो सेपरेट नेशंस हैं और इनको अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू नेशन थी वो जो उनके लीडर्स थे वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे. Next, he presented his remarkable 14 points to secure the rights of Muslims. The other strong step was Lahore Resolution, passed on 23rd March 1940. In this resolution, he clearly stated that Hindus and Muslims are two separate nations.
Muslims must have a separate homeland where they could live freely. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कायद आज़म की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन मेकिंग पाकिस्तान. उन्होंने बहुत एफर्ट्स की, उन्होंने वो 14 पॉइंट्स दिए जिससे कि उन्होंने ये बताया कि मुसलमान जो है वो एक अलग रियासत है, मुसलमान जो है उनके लिए एक अलग होमलैंड होना चाहिए. उन्होंने मुसलमानों के अंदर भी जो शौक है और ये वलवला जो है ये उजागर किया और उनको बताया कि यू मस्ट लिव सेपरेटली बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट वन. नेक्स्ट व्हाट ही डिड इज एक बहुत ही रिमार्केबल जो उनका पॉइंट था वो ये था कि 23 मार्च को जो पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी उसमें उन्होंने जो है वो बहुत ही एक अच्छी स्पीच की थी और उसमें जो है वो रेजोल्यूशन वो एक पास करवाई थी जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुई थी कि मुसलमान और हिंदू जो है दे आर सेपरेट नेशंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान डे is celebrated on 23rd March every year. Quaid-e-Azam Rahmatullah alayh was the man of principles. He compelled the British government to leave the subcontinent and divide it into two separate independent states. With the efforts of Quaid-e-Azam Rahmatullah alayh, Pakistan came into being on 14th August 1947. He became the first Governor General of Pakistan. He died on 11th September 1948. His tomb is located in Karachi. So my dear students, कायद आज़म ने जो है वो फोर्स किया ब्रिटिशर्स को कि वो सब कॉन्टिनेंट छोड़ के जाएं और हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो अपने एरियाज को डिवाइड करें और टू सेपरेट नेशंस जो हैं या टू सेपरेट होमलैंड्स जो हैं वो बनाएं और उसमें अलग अलग रहें. कायद आज़म जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद करवाया उन्होंने और कायद आज़म जो है वो इसके पहले गवर्नर जनरल बने. बाबा कौम कहा जाता है उनको, फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है. इसके अलावा कायद आज़म जो है वो 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हुई और उनकी तदफीन जो है वो कराची में हुई. उनका टूम जो है वो कराची में है जिसकी तस्वीर मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के दिखाई थी. दिस इज द टूम ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान केम इनटू बीइंग और दिस इज द प्रोजेक्ट. ओके, now we have read a lot of things about Quaid-e-Azam. तो आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है which is very easy. Complete the given poster by filling the boxes. So birth and education आपको यहाँ पे लिखनी है कायद आज़म की. So the date of birth is 25th December 1876 and he did his law from Lincoln Inn, England. Struggle और उनकी आपको स्ट्रगल लिखनी है. few words आप उसके बारे में लिखें. उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम सेपरेट होमलैंड जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की. बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो. व्हाट थिंग अबाउट कायद आज़म इंस्पायर्स यू. अच्छा, ये सब बच्चे खुद करेंगे कि आपके लिए कायद आज़म एक इंस्पिरेशन कैसे है. अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए कायद आज़म ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. हाउ? बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और उनकी जो डिवोशन थी वो बहुत ज़्यादा थी जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और हमें ये चीज़ें कायद आज़म से लर्न करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी से, उनकी लाइफ से. सो कंप्लीट इट, पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the practice. For practice, you will download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, mark the correct answer. Which of the following is Quaid-e-Azam's मज़ार? आपको कायद आज़म के टूम जो है वो सिलेक्ट करना है. दिस इज मीनार पाकिस्तान, दिस इज बादशाही, दिस इज शाही किला एंड दिस इज द टूम ऑफ कायद आज़म और मज़ार ऑफ कायद आज़म. Which was the profession of Quaid Azam? There is a lawyer, there is an engineer and then a doctor. So he was a lawyer by profession. Complete the paragraph. Quaid Azam was dash by profession, a lawyer. He joined all India Muslim League Party in the dash 1930. He struggled day and night for the due rights of Muslims. He became the first Governor General of Pakistan. He died on 11th September 1948. His tomb is located in Karachi. So quickly pause the video and complete this worksheet. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards exercise D given on page number 41 of your books. Complete the encyclopedia of Quaid Azam Rahmatullah alayh. Very easy, we have just done the worksheet. So name of the leader, आपको उनका real name जो है मोहम्मद अली जिन्ना वो लिखना है. Then also known as Quaid Azam. Date of birth 25th December 1876.
Place of birth, Karachi. Wazir mention, profession, lawyer, date of death, 11 September 1948, and his tomb is in Karachi. So this is how you will pause the video and you will complete the encyclopedia. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. So my dear students, quickly tell me, what was the contribution of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh in the formation of Pakistan? He worked day and night to tell the Muslims of Pakistan that they are different from the Hindus of the subcontinent and they must get a separate homeland for themselves. And when did Jinnah died? Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh died on 11 September 1948. Where is the tomb of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh located? It is in Karachi. Very good. Okay, my dear students, now let's move forward towards your homework. Okay, now for homework, you will do this independent activity. The political party of Muslims was the All India Muslim League. Search out when did the party came into being. Okay, my dear students, All India Muslim League जो है ये political party थी subcontinent में. There were two parties, Congress and All India Muslim League. Congress was made by the Hindus and All India Muslim League was founded by Sir Syed Ahmad Khan. So on 30 December 1906, the All India Muslim League, popularly known as the Muslim League, was founded in Dhaka, British India. यानी कि उस वक्त ये British India में था and now it is in Bangladesh. The communal idea that the Muslims are a separate nation was sworn into the Indian political ethos first by Sir Syed Ahmad Khan, a philosopher and Muslim reformist. तो सबसे पहले कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो है वो अलग अलग नेशंस है, ये आइडिया जनरेट किया था सर सैयद अहमद खान ने. So my dear students, now let's move forward towards another homework. You will do these MCQs, exercise C. MCQ number 1, 2 and 3 given on page number 41. You will do it in your books. This is your homework. So let's move forward towards the sum up. So today we have learned that Quaid-e-Azam struggled day and night for Muslims. Lahore Resolution was passed in which he stated Muslims must have a separate homeland. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.